Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to English for Grade 8. We are learning Unit 2. Its title is Social Media Today. Our today's SLO is use pre-reading and while reading strategies to analyze and explore different layers of meanings within text, including biases and opinions. So beta, what we are going to do, whatever we are going to read before reading and while reading, we will analyze different words, क्योंकि हमें पता है कि different words के एक से ज़्यादा मीनिंग्स होते हैं, तो we'll analyze कि इस टेक्स्ट में ये किस मीनिंग में इस वर्ड को यूज़ किया गया है और उसमें हमने biases and opinions को भी कंसिडर करना है, राइट. we'll practice कि हम, मुझे तो ये लगा bias means we already have an inclination, या हमें लगता है कि ये ऐसे है, फिर हमने उसको वेरीफाई करना है कि टेक्स्ट में इसको किस तरह से यूज़ किया गया. डू यू अंडरस्टैंड? ओके. और इसी से मिलती जुलती प्रैक्टिस हम ग्रेड 7 में कर चुके हैं. रीड फॉर एक्सट्रैक्टिंग डाइवर्स मीनिंग्स, शेड्स ऑफ मीनिंग्स, है ना, ये हमने ग्रेड 7 में पढ़ा था. तो अब वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट ऑन वन स्टेप अहेड टुडे. Let's start with the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mentions in Quran Surah Al-Baqarah verse 269. Allah grants wisdom to whoever He wills, and whoever is granted wisdom is certainly blessed with a great privilege. But none will be mindful of this except people of reason. Yes, my dear students. बेटा ये ब्यूटीफुल वर्ड्स हमें क्या बता रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे चाहते हैं उसको हिकमा देते हैं, विजडम, उसको विजडम मिल जाती है, और जिसको विजडम मिल गई उसको बहुत बड़ी नेमत मिल गई, राइट. सो दिस इज द टेक्सचुअल मीनिंग. लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं. whoever is granted with wisdom, वो कौन है? We are. हाउ? क्योंकि हमें कुरान की शक्ल में ये विजडम मिल चुकी है. हमारे लिए हिकमा कुरान में है. ये इसका मीनिंग है जो हमें बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना है. डोंट वी वांट टू बी वाइज? Yes, we want to be. From where to get wisdom? From Quran, because it's a huge blessing. तो आज इस वर्ड से हमें मैसेज क्या मिला कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को पढ़ते हैं, हमने उसको समझना है. समझने के लिए तर्जुमा से पढ़िए, तफसीर पढ़िए. जितना ज़्यादा बेटा हम कुरान को एक्सप्लोर करते जाएंगे, हम वाइज बनते जाएंगे. विजडम कम्स फ्रॉम दिस बुक ऑफ हिकमा, राइट. सो अल्हम्दुलिल्लाह वी अंडरस्टूड इट. मेरे बच्चों ने आज से, बेटा इट्स वेरी सिंपल, आप एक आयत लेकर रोज़ उसका तर्जुमा पढ़ें और उस पर गौर करें, राइट. उसकी तफसीर पढ़ें, उसको डिस्कस करें अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ. दिस इज़ हाउ वी बिकम वाइज. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कह रहे हैं कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये बुक ऑफ विजडम दी है, राइट. सो इस तरह से जब एक मीनिंग को, विजडम इज नॉट समथिंग लाइक ये ऐसे, विजडम इज समथिंग वी नीड टू इंटरनलाइज इट, राइट. तो इसी तरह से हम जब कोई वर्ड पढ़ते हैं उसके मीनिंग को कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू थिंक अबाउट दैट, और हमें ज़्यादा डीपली उसको, टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है. और सबसे पहले हमने किस टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना है? कुरान को. Okay, so let's do this activity. Teacher will divide class in pairs. Students will select 5 words and will write their meanings without reading the text. ठीक है बेटा, आप लोगों ने टेक्स्ट को नहीं पढ़ना, just 5 words अपनी मर्जी के कोई से भी सेलेक्ट करें और उनके मीनिंग लिख लें. फिर जब हम टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो we'll compare it कि टेक्स्ट में ये किस सेंस में यूज हुआ है, किस मीनिंग में ये वर्ड यूज हुआ है. सो पॉज द वीडियो, enjoy this brainstorming activity and then come back. Yes, my dear students, are you done with it? Good job. Now keep this paper safe because we are going to compare these meanings. और हमें इसको, by the way, why we need to know it, हमें एक वर्ड का मीनिंग पता है, उसके 4 मीनिंग हमें क्यों पता होने चाहिए बेटा? इससे जब हम उसको डाइवर्स मीनिंग, क्योंकि किसी कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में वो किस मीनिंग में यूज हुआ है ये हमें जब भी पता चलेगा जब हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, राइट. सो दिस गोना हेल्प अस टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट and definitely it's going to help us to develop our critical thinking. और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा क्या है कि बेटा आप अपनी कन्वर्सेशन में और अपनी राइटिंग में
variety of words use करेंगे. इसी तरह से हमारी vocabulary enhance होती है, right? Okay, so let's practice it. All of you, open your books and tell me, have you ever used Facebook or YouTube? For what purpose do you use them? Pause the video, answer these questions to your teacher, and then come back. Yes, my dear students, here we go. In your book, in the very first sentence, the word media. Okay, अब we know, हमने media word सुना है, इसका क्या मतलब है? The term media is the plural form of word medium. और medium क्या है? The word medium refers to means or channel of communication. जब भी आप एक communication क्या, when you send your message, either whatever the form you are using, that is media. Okay, that is medium and media is plural of that. लेकिन हम generally इसको किस reference में use करते हैं? Various forms and outlets through which information and content are shared, such as television, radio, newspaper, magazines and internet. Do you understand? जब हम media कहते हैं तो हमें सिर्फ इन्हीं बातों का समझ आता है, लेकिन actually media is the plural of medium and it can be any form which we are using for communication. Right? This is how we relate it. जो हमें पता है एक मीनिंग है, लेकिन उसका क्या अदर मीनिंग है, वो वर्ड एक्चुअली कितने तरह से टेक्स्ट में यूज हो सकता है, we should know it. All right. Okay, so let's start reading from the very first line. The word media refers to any form of communication that delivers information. Media is the term used to refer to sources that provide us important information and knowledge. Media has always been a part of our society, even when people used painting and writing to share information. Means when the advanced media was not there, even then the communication was there, and what was the like painting or writing, these were the media at that time. There are three main types of media. Now, I want you to pause here. Just think about what three types are there. Just note it down without reading the text, and then we'll compare it with the text. Pause the video, write three types, and then come back. Yes, my dear students. Have you written? Now, let's see. The first one is print media, broadcasting media, and internet media, which is also known as digital media. Right? Print media includes, have you written all these forms? Good job, smart. Print media includes newspaper, magazines, books, banners, billboards, and more. Broadcasting media includes television, radio, and other channels. Internet media includes social networks or websites such as Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Quora, Reddit, Pinterest, blogs, vlogs, and online publication, etc. These platforms are user-friendly and widely used by people around the world. And I hope you are familiar with most of them. Now, what is the difference between blog and vlog? Oh, you are smart. I hope you know the answer. Pause the video, answer this question to your teacher, and then come back. Yes, my dear students. I hope you have answered. Blog is somewhere we just provide the text in writing form, and vlog is where we share videos. Okay, so this is how we enhance our knowledge by knowing the meanings, and there can be, once again, there can be more than one meanings. We have to find out in this context which meaning is used. All right. Today, social media is a term that many people are familiar with. It describes information distributed on social networking websites. Millions of people around the world use social media. Social media is an internet platform that allows users to create content and share information. How social media has become a tool to connect people? There are many ways, so pause the video, answer this question to your teacher, and then come back. Yes, my dear students, I hope you have mentioned many of these ways.
The youth is the main user of social media. Yes, every technology has its advantages and disadvantages. Beta, this is one thing I want you to focus on this. Advantages or disadvantages क्या होते हैं? Advantages we say something when you are getting benefit out of something, that is advantage. But you know, up to some extent, when that is excessive, even itself becomes a disadvantage, right? So here, because we are talking about youth, so use of social media is not itself discouraged, but if it is used excessively, it means you are giving more time to it and it becomes the disadvantage. Now you see, the disadvantage in this context itself, it is not saying the bad things. It is saying when it is not appropriately controlled use, it becomes disadvantage, right? If we say that it all depends on how we use or operate the device, then it would not be wrong. Suppose you open an educational lesson on YouTube, you will get all the information about education. Whatever we want to search, we can find it. When we look at the positive aspects of social media, we find various advantages. The most important advantage is that it is a great source of education. So what we are getting, what is the meaning over here? What the meaning of advantage we are using here? If you are getting education, okay, that is the advantage. And if you are just wasting time, it means that social media is no more helpful for you, and that becomes disadvantage. All the information one requires is just a click away. Students can educate themselves on various topics using social media. Even while sitting in Pakistan, you can attend a class in a foreign country and many more. Okay, so beta, I'm pausing my reading over here. You just read it, read the text, and teacher, you may now one thing in brainstorming activity, we have listed words, so compare it, which meaning is used in this text. And when you are done with reading, kindly come back. I have a very interesting activity for you. Yes, my dear students, are you done with reading? Okay, so here is another chunk of reading. Teachers, you may take the same text or you may take a text of your own choice. लेकिन आपने क्या करना है, आपने ऐसा टेक्स्ट लेना है जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो. बिकॉज अभी तक हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जैसे हमारे SLO में है कि हमने जो टेक्स्ट को उसमें लेयर्स ऑफ मीनिंग लेने हैं विद इन द टेक्स्ट इंक्लूडिंग बाइस्ड एंड ओपिनियंस. ओके, तो ये बाइस एंड ओपिनियन के लिए हमारे पास उस टेक्स्ट में हाउ मेनी थिंग्स आर देयर ऑन विच वी कैन डिस्कस. दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस टेक्स्ट. आप क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें. इसमें एक ग्रुप जो है इस टेक्स्ट की फेवर में, एक इसके अगेंस्ट, या वाइस वर्सा, द वे यू वांट टू डू इट. एंड इफ यू आर टेकिंग अनदर टेक्स्ट, इवन देन आपने बच्चों को इसी तरह से कि वो अपनी ओपिनियन को लाएंगे, अपनी बाइसनेस को डिस्कस करेंगे ऑन द टेक्स्ट बाय, एंड दे विल डू इट by understanding the layers of meanings of the words in the text. Okay, pause the video, enjoy the activity, and then come back. Yes, my dear students, are you done with it? So बेटा हमने क्या सीखा कि there can be a difference of opinion, और आपने उसको अपने टेक्स्ट के सपोर्ट के साथ बताना है, and what we need to increase our knowledge so that हम उस टेक्स्ट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करें उसके मीनिंग्स के साथ. So it's time for the comprehension. The text we just read, ये 3 questions उसी में से हैं. Pause the video, answer these questions, write the answers in your notebook, and then come back. Yes, my dear students, are you done with it? Okay, so it's your homework time. It's a very interesting text. Here is a sentence and there are 2 blanks in it. और आपने इन sentences को एक ही word के साथ complete करना है. For example, I looked at my dash for the time dash out for that tree. तो यहाँ क्या word हम use करेंगे? Watch. Now you see, दोनों जगह पर एक ही word है लेकिन उसके meaning different है. This is how we are learning. Same word have different meanings, so we have used it for the different contexts. आपने इस पूरे
task को इसी तरह से complete करना है अपने घर पर. And here I brought a worksheet. Teacher, once again, it's very interesting that 2 words आपने text को analyze करते हुए correct word को use करना है. So kindly provide this printed worksheet to students so they can understand different layers of meanings. So after completing this practice, I'm just winding up. I hope you understand what we have learned, and tomorrow we'll learn further. Till that time, take care. Thank you, and Allah Hafiz.